Hello students. Uh, t- Today we are going to represent the information technology department. Myself is Professor Vibhavari Javle. Now here onwards the presentation, it is only basis of the selector types. In that previous mm, lectures we have seen the three types of CSS. Now here the basic is very important to go further on the basis of selector. सेलेक्टर के क्या टाइप्स है वो इंफॉर्मेशन लेने के पहले वी जस्ट रिक्वायर टू क्लियर आवर बेसिक्स एज वेल. सिंटैक्स ऑफ CSS. CSS के सिंटैक्स क्या होता है? अगर कोई प्रोग्राम के अंदर हमें CSS एलोकेट करना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? For that purpose I have given two example. The example one, number one. So whenever we just require to allocate the declaration part in the form of the single property, such as, see here in this example, selector is P and the declaration is in terms of the 2 points. The first is the property and its respective value. For example, here I have taken P is the selector, and in the declaration part the property name is the color and the value is blue. Now I have taken the second example as the bunch of variety of the property. In some programs, if we require to assign the number of properties over the single element, such as h1 tag, h2 tag, h3 tag, or a p tag is there, then we can assign this in this form of the second example, like selector is h1. Now the declaration part here, we require to declare in a two ways. The first is when we assign the property, the change in the color of the h1 tag should be the red and the font size should be the 12px. So here we require the two properties to be applied on the h1 tag. So for that purpose we must include this declaration, these two declaration in our CSS syntax. Hope so you understood all these basic things. Now we are going to start with different types of the class CSS selectors. The first one, CSS ID selector, CSS class selector, CSS universal selector, and the fourth one, CSS group selector. Now here in this presentation I'm gonna explain CSS group selector along with the CSS universal selector. Now I'm going to explain the class ID selector. ID, it means identification of something. So when we assign that CSS ID selector, so that means some identification is given to the CSS. CSS ID selector means what? ID selector selects the ID attribute of the HTML element to select the specific element. It is written with hash character. ID is always यूनिक इन द पेज. सो दैट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो रोल नंबर है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल 9901. सो it will get to print on your ID card. Okay, so that means what? That number, that roll number is unique one for entire division or in between the four divisions. So that means in this same manner CSS ID selector should be unique for your page. Each element can have only one ID. When we supposed to assign this ID selector over the single
element or a tag we are using in our HTML code. So that means this CSS is only unique for that particular element or the tag. It means what? अगर सी एस एस आई डी सिलेक्टर का यूज़ हम लोगों ने कोई टैग के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया है, तो वो सी एस एस प्रॉपर्टी सिर्फ जो एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जिस टैग के लिए यूज़ करेंगे, वो पूरे पेज में उस एक ही टैग के ऊपर अप्लाई होगा. उसके अलावा कोई भी टैग्स के ऊपर हम वो एलोकेट नहीं करेंगे. समझ में आया? इसलिए इधर लिखा है कि ईच एलिमेंट कैन हैव ओनली one ID and ID is always unique in the page. And there is a one more important point: each page can have only one element with that ID. मतलब देखो, एक ही पेज के अंदर हमने जहाँ पर ID CSS ID सिलेक्टर का यूज़ किया है, एंटायर पूरे पेज में वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा. एक ही जो एलिमेंट, एक ही टैग होगा, उसके लिए अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल सी हियर. अभी आपको वो पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि क्या होता है सी एस एस आई डी सिलेक्टर. सी हियर, इन दिस program I assign the CSS ID selector. In that previous section I taught you that the declaration of CSS ID selector should be starts with the hash symbol. Hash symbol is there. Again you must have the selector name. उसका नाम क्या है? ABC hash selector. But the CSS property or the CSS assigned in between the style tag, हमेशा जो CSS हम allocate कर रहे हैं वो style tag के अंदर ही चाहिए. अगर उसको हैश टैग है तो हैश का क्या रहता है? हैश रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी एस एस आई डी सिलेक्टर. ये हो गया. इन जनरल जैसे सी एस एस हम एलोकेट करते हो, जैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वैसे ही एलोकेट करना है, बट यहाँ पर नाम एलोकेट होगा ए बी सी हैश ए बी सी. आगे का जो पोर्शन होगा डिक्लेरेशन का, इट विल रिमेन सेम एज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग the property and its value. Here I have allocate the text align is equal to center. It is my one declaration. Second one is the color is equal to blue. It is my second declaration. First and the second declaration. It should be assigned in between the style. So it is for the CSS ID selector declaration. ये उसका declaration का part हुआ. अगर हमें CSS ID selector का यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम में, अभी आगे जो प्रोग्राम मैंने एलोकेट किया है नीचे है, in between the body section. See here, I applied this CSS ID selector over the P tag. Okay, मैंने यहाँ पर P tag के यहाँ पर मेरे दो sentences है. I have allocate the two sentences while using the P tag. But from these two sentences I have only applied this CSS ID selector over the first P tag. वो कैसे allocate करना है? P ID ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने CSS प्रॉपर्टी ID के लिए ही यूज़ किया है. P स्पेस ID इज इक्वल टू ABC. ABC ये ID सिलेक्टर का नाम जो हमने स्टाइल टैग के बीच में एलोकेट किया है. मैंने ABC लिया है, तुम लोग चेंज कर सकते हो ABC XYZ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ABC से हैश ABC हमने एलोकेट किया, मतलब हमें क्या किया? वी एलोकेट द CSS ID सिलेक्टर इन बिटवीन द स्टाइल टैग. सो वो नीचे यूज़ करना चाहिए, राइट? और अगर नीचे हम कोई एक सिंगल ही जो एलिमेंट होगा, जो टैग होगा, उसके लिए यूज़ करेंगे. अभी यहाँ पर सिंगल एलिमेंट क्या है? P ये क्या है? एलिमेंट है जिसके ऊपर हम यूज़ करेंगे, और ये क्या है? टैग है. तो P स्पेस ID इज इक्वल टू ABC जो CSS ID सिलेक्टर का नाम हम लोगों ने एलोकेट किया. आगे क्या होगा? देखो सेंटेंस क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ इज अफेक्टेड. ओके, मतलब क्या होगा? ये जो पैराग्राफ मैंने एलोकेट किया है, इट विल
grab all the CSS properties allocated over it. Okay, now again in this same program I have been used the second paragraph here. This paragraph is not affected, मतलब ये paragraph के ऊपर कोई भी property CSS property affect नहीं करेगी. समझ में आया होगा, आई होप सो. सी एस एस आई डी सिलेक्टर का ये एग्जाम्पल है. ध्यान से देखो, स्टाइल टैग के बीच में मैंने सी एस एस आई डी सिलेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एलोकेट किया है. वो कैसे होता है, आई डी सिलेक्टर यूज़ कर रहे हो तो हैश ए बी सी, आगे सी एस एस का जैसे डिक्लेरेशन का पार्ट है वो वैसे ही आएगा. इधर नीचे आई हैव बीन यूज द टू पी elements, two p tags are here, but from them I have only assigned the first one css property. Okay, अभी इसका जो output है वो कैसे आएगा. See the output for it. See the output. As I have allocated in my HTML code, only the first paragraph has been affected, not the second one, because I have assigned the CSS ID selector property over the first tag. ध्यान से देखो, जो पहला वाला जो प्रोग्राम था मेरे यहाँ पर दोनों भी क्या थे, सेम टैग्स यूज़ किए थे. ओके, पी टैग H1 नहीं था और क्या नहीं था, P नहीं था. दोनों सेम ही टैग थे. ओके, P एंड P टैग. बट दोनों पी टैग होते हुए मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले पे ही सी एस एस प्रॉपर्टी एलोकेट की. मतलब ये प्रॉपर्टी मैं पूरे पेज के लिए एक ही बार यूज़ कर सकती हूँ. और अगर हैश ए बी सी मैंने अगर पी टैग के लिए ही यूज़ किए तो और कोई एक जगह पर मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स द सी एस एस आइडेंटिफिकेशन सिलेक्टर हैज़ बीन यूज ओवर द पी टैग, द फर्स्ट पी टैग. अभी यहाँ पर दो है, लेकिन जो फर्स्ट जो मेरा पी टैग था उसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है. नाउ CSS class selector. Class selector selects the class attribute of HTML element with the specific class attribute. हमेशा जो टैग्स होते हैं उसके साथ क्या आना चाहिए, एट्रीब्यूट आना चाहिए. बट अगर क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट क्या करता है, वो करता है क्लास का जो एट्रीब्यूट हमने कौन से टैग के लिए यूज़ किया है. देखो हियर इट इज़ रिटर्न विद द फुल स्टॉप सिंबल, कि जैसे हमने आईडी सिलेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, हैश सिंबल से. इन दैट सेम मैनर इफ़ वी रिक्वायर टू use the CSS class selector, it should be started with the full stop symbol. Class selector is used when you want to change the group of elements within your HTML page. इसका मतलब क्या, देखो अगर हमको बहुत सारे जो टैग्स होंगे, एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, उनके लिए सेम प्रॉपर्टी का सेट हमें एलोकेट करना है. तो हम लोग हर बार जाके कि वो सिलेक्टर की हाँ ये सब कि पूरे टैग के लिए असाइन किए हैं, वहाँ पर हर एक सिलेक्टर लेके एक एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा जाएगा. तो क्या हम लोग इन दिस मैनर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डॉट क्लास एक एलोकेट करके सेम प्रॉपर्टी का सेट नीचे कितने सारे भी जो टैग्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए इक्वली अप्लाई कर सकते हैं. See here, you can use the same class on your multiple elements or the tags. Now I have shown you the example for that. So here it is example for the class selector. Here I have been used this dot intro. It is the name of my CSS class selector. मेरा नाम, इसका नाम क्या है, CSS class selector का मेरे intro. वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, इट विल स्टार्टेड विद द फुल स्टॉप सिंबल. अगेन आई हैव एलोकेट द सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स द वैल्यू आई डिड इट इन अ प्रीवियस HTML कोड. वो क्या है, टेक्स्ट अलाइन शुड बी सेंटर एंड द कलर इज ब्लू. ये दोनों प्रॉपर्टी के सेट मैं एलोकेट करती हूँ डॉट इंट्रो नाम के CSS क्लास सेलेक्टर से. ये हो गया. इसका डिक्लेरेशन पार्ट होना चाहिए
स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। अगर स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज आता है तो वो क्या है, इंटरनल CSS मैंने यूज़ किया है। नाउ इन हियर द बॉडी सेक्शन, सी हियर, यहाँ पर है क्या, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज है, एक है H1, एक है P। ओके, in that H1 I have assigned the class। जो सिलेक्टर का टाइप हमने ऊपर डिफाइन किया है वो क्या है कि डॉट से स्टार्ट है, तो वो हमारा CSS क्लास सिलेक्टर है। तो जब भी हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी टैग्स रहेगा उसके आगे उसका आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, बिकॉज हमने ऊपर क्या यूज़ किया है, क्लास सिलेक्टर है, इसलिए H1 के यहाँ पर H1 से स्पेस आना चाहिए, क्लास इज इक्वल टू जो नाम एलोकेट किया है वो नाम आना चाहिए, बिकॉज एक ही प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे क्लास सिलेक्टर यूज़ कर सकते। इधर मैंने एक ही दिखाया है, आगे हम जब एग्जांपल लेंगे, मैं तुमको असाइनमेंट दूंगी, उसमें बहुत सारे CSS क्लास सिलेक्टर यूज़ करेंगे। सी हियर H1 क्लास इज इक्वल टू इंट्रो, ये नाम है उसका। दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन, ये है H1 के लिए। नाउ सेपरेट और एक टैग के ऊपर मैंने यूज़ किया है क्लास सिलेक्टर, तो वो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, इन द बॉडी सेक्शन P स्पेस क्लास, क्लास सिलेक्टर यूज़ किया है इसलिए इधर क्लास आना चाहिए। इन दैट प्रीवियस सेक्शन मैंने क्या किया था, ID सिलेक्टर यूज़ किया था, तो जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे मैंने P ही यूज़ किया था तो P स्पेस ID इज इक्वल टू उसका नाम। इन दैट सेम मैनर हमें ऐसे यूज़ करना है, P स्पेस क्लास इज इक्वल टू इंट्रो, उसका नाम। दिस इज द पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड अगेन। तो मतलब क्या है, ऊपर के जो दोनों प्रॉपर्टी मैंने इस H1 जो एलिमेंट है, जो टैग है, P जो एलिमेंट है, जो टैग है, उसके ऊपर यूज़ किया। ये यूज़ करने के बाद जो आउटपुट है वो ऐसे आना चाहिए, दिस हेडिंग इज़ ब्लू एंड सेंटर अलाइंड। ये मैंने यूज़ किया था CSS क्लास सेलेक्टर over the H1 element or the H1 tag, and the remaining one, this is the paragraph, is blue and center aligned. So this property I have assigned over the P tag. Now the most important thing है difference in between ID and the class selector, वो क्या है, हमने ID सिलेक्टर भी देखा, क्लास सिलेक्टर भी देखा, इसमें क्या है, ID इट गिव्स आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लास सेम प्रॉपर्टी हम एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बट ID सिलेक्टर के बारे में ऐसे नहीं। सेट ऑफ प्रॉपर्टी है, ID के लिए यूज़ किया है तो वो पूरे प्रोग्राम में एक ही जो एक टैग होगा, एक ही एलिमेंट होगा, उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखो। See here, ID is unique in a page and can only apply to at most the one element, while class selector can apply to the multiple elements। मतलब ID selector अगर हमें यूज़ करना है तो पूरे पेज में सिर्फ एक ही जो टैग होगा, एक ही जो एलिमेंट होगा, उसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट क्लास सिलेक्टर है तो सेम सेट ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ है, हम हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे टैग्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे जिसके ऊपर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, होप सो आप लोगों को ये आईडी एंड क्लास सेलेक्टर क्या है समझ में आया। आगे का जो लेक्चर होगा, इन दैट लेक्चर सो वी विल सी यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड द ग्रुप सिलेक्टर। थैंक यू। So first one, CSS group selector. CSS group selector is mostly used so when we require to apply the same style definition over the different elements in our HTML code. That means grouping selector is used to select all the elements with the same style definitions if we require in our HTML code. It is used to minimize the code as well. The commas are used to separate each selector in a grouping selector. If we need to define the grouping selector in our program, we must require to separate those element while using the commas in between them.
you can use the same class on the multiple elements also. At that same time, the same style definitions, if we require to apply over the number of elements we need, at that time we must require the CSS group selector. Here I have given one example with and without group selector. The first we can see with without using the group selector. Here I have mentioned one example. I have used the h1 tag along with the two properties and its respective value. The first one is the color is red and the font size should be 20 pixel. Here these two properties I have applied on the h1 tag. At that time, if I require to apply the same property and its value for the h2 tag, then the syntax should be h2, the color red, font size 20 pixel. And the same property if I require to apply on the h3 tag, then I need to allocate the syntax like h3, the color red, font size and the 20 pixel. So to apply these same properties over the three different elements, we must require to um, assign each and every element separately. But when here see in above we require the same style definitions over the h1, h2, h3 elements without group selector. And the next one I have given one example, the same example while using the group selector. Here while applying the group selector, CSS group selector, then for the above requirement syntax should be like this: h1, h2, h3, and the same style definitions as the color red, font size should be 20 pixel. Now I have shown one HTML code in which I have been used the CSS group selector. See here the same example. From that same example I just put this h1, h2 and uh, h3 tag, okay, and the same style definition is there, the color red and the font size should be the 20 pixel. And only and these three group selector should be assigned in between the style tag open and style tag close, and this over all entire syntax should be enrolled in between the head section only of your HTML code. And the next part is for the body section of the HTML code. Here I define the statements enclosed in the each and every tags I have been assigned in the CSS group selector. So that is the h1 tag is here, the global warming is not a prediction. In between the h2 tag open, h2 tag close, I have allocate the sentence there that it's happening, and in between the h3 tag open and h3 tag close, I have mentioned one statement there that global warming must be seen as economic and security threat. So after applying the CSS group selector, so let me show you the executions. See here the same things are applied over the statements in between the h1 tag, h2 tag and h3 tag. So you you very much aware about the features of h1 tag, h2 tag and h3 tag. So that means those are based on the font size. But here I have mentioned already that the font size should be remain same in my CSS group selector. Okay, अगर CSS ग्रुप सेलेक्टर है मतलब मुझे वहाँ पर स्टाइल टैग ओपन चाहिए, स्टाइल टैग क्लोज चाहिए इन बिटवीन द हेड सेक्शन इन अवर HTML कोड, एंड जो भी सेंटेंसेस रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे जो हम नीचे
यूज़ करने वाले हैं, जैसे H1 होता है, H2 एंड H3 टैग होता है, तो उनके जो फॉन्ट साइज़ होते हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, जैसे H1, H2 एंड H3। बट नाउ इधर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है कि फॉन्ट साइज इज़ इक्वल टू 20 पिक्सल, मतलब सारे H1 एंड H2 एंड H3 टैग, सारे के सारे जो टैग्स है, मीन वाइल जो स्टेटमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं उनका सेम साइज़ हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर. Universal selector selects all the elements on the web page. It is written with the star symbol at the or asterisk symbol. It is used as a wildcard character. The CSS universal selector should be represented with the star symbol, and that should be again uh, allocated in between the style tag open and style tag close. Here I have mentioned star, the color green, the font size is near about the 30 px, but here I did not mention the name of the selector because the name of this selector is universal selector. So here, so the number of elements we use in between the body section, so those properties, it will remain the same as these style definitions are mentioned in a style tag open and style tag close. Now I will show you the execution screen after the execution of this code. See here, the global warming is not prediction, it's happening. Global warming must be seen as economic and security threat. So all the style definitions are equally applied over the number of elements we use under the CSS universal. So now I will explain a difference in between universal and the group selector. uh, if you require to changes some of the elements in your code, HTML code, so then you must require to go with the group selector. And if you require to apply the same style definition over the number of elements, all the number of elements enclosed in your HTML code, so then you must go with the universal CSS selectors. See here, the group selector could be able to applied over the some selected elements, but when we require to apply the same style definition over the each and every element we use, then we must require or need the universal selector.